Examples of stoichiometric calculation. In this video, we will study about the problems, the questions, the numericals which are related with the stoichiometry. Problem number 1.3 from NCERT book of class 11th chemistry. How many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion? इस रिएक्शन में इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने मिथेन मॉलिक्यूल्स कितने मोल्स ऑफ मिथेन रिक्वायर्ड रहेंगे 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करने के लिए. So we can write a balanced chemical equation since the combustion of methane has been questioned. So combustion of methane, that is the burning of methane in the presence of oxygen. So when methane burns in the presence of oxygen, it provides carbon dioxide and water molecule. From the balanced chemical equation, we can see 1 mole of methane combines with 2 moles of oxygen to gives 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. 1 mole of methane combines with 2 moles of oxygen to gives 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water molecule. So we can say 1 mole of carbon dioxide is produced from 1 mole of methane. Or we know 1 mole of any substance is the molecular weight of that substance. So 1 mole of carbon dioxide means 44 gram of carbon dioxide is obtained from 1 mole of methane. Or in order to get 1 gram of carbon dioxide, so 44 gram of carbon dioxide is obtained from 1 mole of methane. So 1 gram of carbon dioxide will be obtained from 1 divided by 44 mole of methane. Or if we want to obtain 22 gram of carbon dioxide, so simply multiplied both the side with 22 multiplied by 20. So we will get 22 gram of carbon dioxide from 22 divided by 44 moles of methane, that is 0.5 mole. So 0.5 moles of methane will be required to produce 22 gram of carbon dioxide. Let us take the example. Second, problem 1.4. 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia. Calculate the amount of ammonia formed and identify the limiting reagent in the production of ammonia in this situation. So in this question, the combination of nitrogen and hydrogen gives ammonia. So we can write a balanced chemical equation between nitrogen, hydrogen and ammonia. So from this balanced chemical equation, we can see 1 mole of nitrogen combines with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. Or we can say 28 gram. 28 gram is the molecular weight of nitrogen combines with 6 gram of hydrogen. 6 gram means 3 multiplied by 2. 2 is the molecular weight of hydrogen. So 6 gram of hydrogen to give 2, 2 multiplied by 17. 17 is the molecular weight of ammonia, that is 34 gram of ammonia. So from this balanced chemical equation, we can derive the information. And in the question, it has been asked if 50 kg of nitrogen is mixed with 10 kg of hydrogen, so what will be the amount of ammonia produced? So let's start. We know
number of moles equals to given weight divided by the molecular weight. And the number of moles of nitrogen can be calculated as the given weight of nitrogen, that is 50 kg. That is 50 kg divided by 28 gram. 28 gram is the molecular weight of nitrogen gas. So there is a difference in the unit. So we will convert the unit from kg to gram by multiplying the value with 10 to the power 3. So we will get the number of moles of hydrogen as 17.85 multiplied by 10 to the power 2. Similarly, we can calculate the number of moles of hydrogen. Number of moles of hydrogen will be equal to given weight upon the molecular weight of hydrogen. So given weight of hydrogen is 10 kg and the molecular weight of hydrogen is 2 kg. So there is a difference in the units. Therefore, we will convert kg into gram. So it can be converted by multiplying 10 to the power 3 with the value. So it will get converted to gram. So we will get the number of moles of hydrogen as 5 into 10 to the power 3. Now in this question, the first point that is asked is to calculate the limiting reagent. Limiting reagent is the reactant which is being consumed completely, जो पूरी तरह से consumed हो जाता है, जो कुछ भी नहीं बचता. From the balanced chemical equation से हम ये देखते हैं कि 1 mole of nitrogen requires 3 moles of hydrogen. 1 mole of nitrogen requires 3 moles of hydrogen. तो हमारे पास नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं 17.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3. जब नाइट्रोजन का वेट 50 ही लेंगे. तो अगर हमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन पर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लग रहे हैं तो 17.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पे हमें लगेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 into 10 to the power 2. So that will be equal to 5.35 into 10 to the power 3 moles of hydrogen. लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 5 into 10 to power 3. और अगर हम नाइट्रोजन को 50 kg ले रहे हैं तो 50 kg यानी कि 17.85 into 10 to the power 3 10 to the power 2 moles of नाइट्रोजन के लिए हमें लगेंगे 5.35 into 10 to the power 3 moles. बट हमारे पास 5 into 10 to the power 3 है. दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है 5.35 लगना चाहिए, हमारे पास एक्चुअल में 5 है. दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 0.35 into 10 पावर 3 मोल्स एक्स्ट्रा लगेंगे. लेफ्ट नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा लगेंगे. दैट मीन्स कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो चुका है. हमें 0.35 एक्स्ट्रा लग रहा है, लेफ्ट नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा. So in this way we can say hydrogen is the limiting reagent. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस. कितनी अमोनिया यहाँ पर बनेगी अगर हम 50 kg एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन यूज करते हैं. तो हमें मालूम है कि हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, इसलिए हम हाइड्रोजन के टर्म्स में ही अमोनिया का प्रोडक्शन फाइंड आउट करेंगे. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम देखते हैं कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन combines with 2 moles of ammonia. तो 2 moles of ammonia से combine हो रहा है. तो 1 mole of hydrogen कितने लगेंगे, obviously 2 divided by 3 moles of ammonia प्रोड्यूस करेंगे. तो 1 mole of hydrogen will provide 2 by 3 moles of ammonia. Now simply हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, अगर हम हाइड्रोजन को 10 kg ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स निकाले थे 5 into 10 to power 3. तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें 2 by 3 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोवाइड करते हैं. तो 5 into 10 to power 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रोवाइड करेंगे 5 into 10 to power 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 by 3. यानी कि दोनों साइड हमें क्या करना है, सिर्फ ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना.
तो दोनों साइड हम ये इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.33 इंटू 10 to power 3 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो कितने अमोनिया प्रोड्यूस होंगे? द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस विल बी इक्वल टू 3.33 इंटू 10 to power 3 moles of ammonia will be formed.